हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियन स्टॉक मार्केट। आज हम बात करेंगे स्टॉक टिप्स के बारे में, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। आपका प्यार और सहयोग आवश्यक है, तो सहयोग दीजिएगा। चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। सो गाइस, आज हम बात करते हैं स्टॉक टिप्स के बारे में। फर्स्ट स्टॉक है हमारा मरीको लिमिटेड। कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कंपनी फाइनेंशियल भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एक शॉर्ट टर्म डिलीवरी आपको बाय करनी है, मरीको लिमिटेड। लेट्स नो मरीको लिमिटेड। मरीको लिमिटेड with a target price of rupees 600. The current market price of Marico Limited is rupees 540. Marico Limited, incorporated in the year 1988, is a large cap company having a market capital of rupees 69,984.56 crore, operating in FMCG sector. एक FMCG कंपनी है Marico Limited। Financials for the quarter ended 30/9/2021. The company reported a consolidated total income of rupees 2,444 crore, down -4.23% from last quarter. Total income of rupees 2,552.00 crore and up 21.23% from last year same quarter. Total income of rupees 2016.00 crore. Company reported net profit after tax of rupees 316.00 crore in latest quarters. Promoters FII Holdings. Promoters held 59.52% stake in the company as of, while FIIs own 25.92%, DIIs 8.5%। ओके सो गाइज, एक शॉर्ट टर्म डिलीवरी आपको बाय करनी है मरीको लिमिटेड। ओके नेक्स्ट स्टॉक। नेक्स्ट स्टॉक है डाबर इंडिया लिमिटेड। कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कंपनी फाइनेंशियल भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। डाबर इंडिया लिमिटेड, एक शॉर्ट टर्म डिलीवरी आपको बाय करनी है। Dabur India Limited with a target price of rupees 650. The current market price of Dabur India Limited is rupees 609. Dabur India Limited, incorporated in the year 1975, is a large cap company having a market capital of rupees 1,06,610.59 crore, operating in FMCG sector. एक FMCG कंपनी है ये डाबर इंडिया लिमिटेड। For the quarter ended 30/9/2021, the company reported a consolidated total income of rupees 2,930.02 crore, up 8.66% from last quarter. Total income of rupees 2,696.38 crore and up 12.54% from last year same quarter. Total income of rupees 2,603.63 crore. Company reported net profit after tax of rupees 505.73 crore in latest quarters. Promoters FII Holdings. Promoters FII Holdings. Promoters held 67.36% stake in the company as of 30 September 2021, while FIIs own 21.35%, DIIs 3.41%। ओके सो गाइस, एक शॉर्ट टर्म डिलीवरी आपको बाय करनी है डाबर इंडिया लिमिटेड with a target price of rupees 650. The current market price of Dabur India Limited is rupees 609. Okay, next stock. Okay, so guys, next stock है राडिको खैतान। राडिको खैतान कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कंपनी फाइनेंशियल भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। शॉर्ट टर्म डिलीवरी आपको बाय करनी है राडिको खैतान।
with a target price of rupees 1200. The current market price of Radico Khaitan is rupees 1093. Radico Khaitan Limited, incorporated in the year 1983, is a mid-cap company having a market capital of rupees 14,593.16 crore, operating in beverages alcoholic sector. एक अल्कोहलिक कंपनी है रेडिको खैतान. Financials for the quarter ended 30/9/2021. The company reported a consolidated total income of rupees 710.58 crore, up 17.51% from last quarter. Total income of rupees 604.70 crore and up 12.11% from last year. Same quarter, total income of rupees 633.80 crore. Company reported net profit after tax of rupees 69.20 crore in latest quarters. Promoters FII Holdings. Promoters held 40.27% stake in the company as of 30 September 2021, while FIIs owned 20.06%, DIIs 18.64%. Okay. एक शॉर्ट टर्म डिलीवरी रेडिको खैतान. The current market price of Radico Khaitan is rupees 1200. The current market price of Radico Khaitan is rupees 1093 with a target price 1200. Operating in beverages alcoholic sector. Okay, next stock. Okay, so guys, next stock है तनेला प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड. कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कंपनी फाइनेंशियल भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. एक शॉर्ट टर्म डिलीवरी आपको बाय करनी है तनेला प्लेटफॉर्म्स. Tanela platform with a target price of rupees 1600. The current market price of Tanela Platforms Limited is rupees 1515. Tanla Platforms Limited, incorporated in the year 1995, is a small cap company having a market capital of rupees 20,334.13 crore, operating in IT software sector. एक IT कंपनी आई है Tanla Platforms. Financials for the quarter ended 30/9/2021. The company reported a consolidated total income of rupees 844.76 crore, up 33.94% from last quarter. Total income of rupees 630.68 crore and up 43.67% from last year. Same quarter, total income of rupees 587.99 crore. Company reported net profit after tax of rupees 136.17 crore in latest quarters. Promoters FII Holdings. Promoters held 42.51% stake in the company as of 30 September 2021, while FIIs own 14.93%, DIIs 0.04%. Okay, so guys, एक शॉर्ट टर्म डिलीवरी आपको बाय करनी है तानला प्लेटफॉर्म्स with a target price of rupees 1600. The current market price of Tanla Platform Limited is rupees 1515, operating in IT software sector. ओके, सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही. कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अनुमति दीजिए. नमस्कार. बोलो राधे राधे.